हाय दोस्तों, वेलकम टू द टेक सत्या यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे हाउ टू इंस्टॉल गिट ऑन योर विंडोज 11 लैपटॉप। ओपन योर एनी फेवरेट वेब ब्राउज़र। जैसे कि मैं क्रोम का वेब ब्राउज़र में आ चुका हूँ। वहाँ पे आपको टाइप करना है गिट एंड ये है गिट का ऑफिशियल लिंक। तो फर्स्ट वाला लिंक को आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड में आना है। वहाँ पे दिखेगा डाउनलोड फॉर विंडोज़, तो उसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपको सेकेंड पेज में ले जाएगा। तो वहाँ पे आपको चूज करना है कौन सा बीट पर आपका विंडोज़ लैपटॉप। मेरा 64 बीट है, मैं 64 बीट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। वो भी डाउनलोड होगा, शुरू हो जाएगा। हाँ, नाउ डाउनलोड इज गोइंग ऑन। इट विल बी टेक 2 सेकेंड, या सॉरी 1 minute. It's fully depend upon your network speed, so that's why maybe mine is very slow, that's why it's taking time. So please wait some time. So this is the latest version of Git. Here you can see this is the latest version of Git. It was released 20 days ago only. So we are installing latest version. So now installation has been done. So उसके बाद राइट क्लिक करो। ये अभी पूछेगा, कुछ परमिशन पूछ रहा है, आपको अलाउ करना है। यस किया मैंने। तो पहले उसको मिनिमाइज कर दीजिए क्रोम का वेब ब्राउज़र को। ये देखिए ये गिट का सेटअप फाइल ओपन हो चुका है। तो आपको नेक्स्ट करना है। वहाँ पे आपको पूछ रहा है कि कौन सा लोकेशन पर चाहिए। तो मेरा जो लोकेशन है ये मेरे लिए ओके है, तो मैं उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ नेक्स्ट। तो वहाँ पे आपको टिक करना है, जैसे कि वो पूछ रहा है कि डेस्कटॉप आइकन। सो आपको उसके ऊपर टिक करना है एंड क्लिक टू नेक्स्ट एंड this is okay. Click to next. Here you can drop and down option is there, you can choose anything, but use Vim, it is okay for me, so I am click okay next. And this is also next. This is the recommended, so I click next. And उसको भी आपको यूज करना, जैसे कि ये ओपन एसएसएच, तो ये कंपलसरी है, तो मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। इसके ऊपर फिर भी नेक्स्ट, क्लिक टू नेक्स्ट अगेन। ऑल्सो एज ए डिफॉल्ट यू कैन क्लिक टू नेक्स्ट अगेन नेक्स्ट and click to next also, and this also will be next. And installation has been started, so please wait some time. जी नाउ इंस्टॉलेशन इज फिनिश्ड। वहाँ पे आपको दिख रहा है ये गिट बैक का आइकन यहाँ पे आ चुका है डेस्कटॉप में। तो और भी एक चेक करने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको टाइप करना है गिट। जैसे मैं कमांड प्रॉम्प्ट में आ चुका हूँ, वहाँ पे टाइप करो गिट। सी इफ फॉलोइंग दिस शोइंग ना, देन यू कैन अंडरस्टूड दैट इज हैज बीन इंस्टॉलेशन डन। सो थैंक यू।